Show that for all z1, z2 belongs to C, where C is the set of all complex numbers. Conjugate of z1 into conjugate of z2 is equal to conjugate of z1 into z2. Solution. Let z1 is equal to x1 plus iota y1. z2 is equal to x2 plus iota y2. Now z1 conjugate is equal to x1 minus iota y1. z2 conjugate is equal to x2 minus iota y2. When we take the conjugate of a complex number, only the sign of the imaginary part changed. As z1 is equal to x1 plus iota y1, z1 conjugate is equal to x1 minus iota y1. Similarly, z2 conjugate is x2 minus iota y2. Okay, now z1 conjugate into z2 conjugate is equal to x1 minus iota y1 into x2 minus iota y2. This is equal to x1 into x2 minus iota x1 into y2, x1 into y2 minus iota into y1 multiplying with the x2, we get iota x2 y1 plus iota square minus iota y1 into minus iota y2 is equal to iota square y1 y2. This is equal to x1 x2 minus x1 y2 plus x2 y1 into iota. Take minus iota common from this term and this term. Value of iota square is minus 1, y1 into y2. So this is equal to x1 x2 minus y1 y2 minus x1 y2 plus x2 y1 into iota. Say this is equation 1. Now z1 into z2 is equal to x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2. Now x into x1 into x2 is equal to x1 x2, x1 into iota y2 is equal to x1 y2
iota plus iota y1 into x2, x2 y1 into iota y1 into iota y2, iota square y1 into y2. This is equal to x1 x2 plus, take common iota from this term and this term, get x1 y2 plus x2 y1 into iota. The value of iota square is, the value of iota square is -1 y1 y2. So we have x1 x2 minus y1 y2 plus x1 y2 plus x2 y1 into iota. Now conjugate of z1 into z2 is equal to x1 x2 minus y1 y2 minus when we take conjugate, this term, the sign of this term will be changed into iota. Say this is equation 2. From 1 and 2, equation 1 and 2, we get z1 conjugate into z2 conjugate is equal to z1 into z2 conjugate. This is the required result. For all z1, z2 belong to C, the set of complex number, z1 conjugate into z2 conjugate is equal to z1 z2 conjugate. Solution. फर्स्ट करते हैं कि z1 की वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2. नो z1 कंजुगेट किसके बराबर होगा? कंजुगेट लेने से आयोटा वाली जो टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा. इस तरह इसका साइन चेंज हो गया. ठीक है, तो नो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? x1 इंटू x2 ये चीज़ आ गई, x1 इंटू माइनस आयोटा y2 ये इक्वल आ गया आयोटा x1 y2. फिर इसको मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा y1 को x2 के साथ तो ये आ गया आयोटा x2 y1. ठीक हो गया. इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये प्लस हो गया और बन गया आयोटा स्क्वायर y1 y2. ठीक है, x1 y2 x1 x2 माइनस आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, इनमें से आयोटा हमने कॉमन निकाल लिया और माइनस भी कॉमन निकाल लिया. ठीक है, यहाँ बचेगा x1 y2 प्लस x2 y1. ठीक हो गया. ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 y1 इंटू y2. ठीक हो गया. अब इसको हम लिख सकते हैं इसके साथ मिला के ये रियल नंबर बन गया x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस ये लिख लिया हमने अलग x1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा.
तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब z1 z2 किसके बराबर होगा, z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई हमने किया, x1 x2 आ गया, x1 x2, फिर आ गया x1 इंटू आयोटा बाई, या इसको मल्टीप्लाई करना है x1 को आयोटा बाई 2 के साथ, तो आ गया x1 बाई 2 इंटू आयोटा, इस तरह आयोटा बाई 1 को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ, x2 बाई 1 आयोटा, ये चीज़ आ गई। अब मल्टीप्लाई किया आयोटा बाई 1 को आयोटा बाई 2 के साथ, ये आ गया आयोटा स्केयर बाई 1 बाई 2, ठीक हो गया। अब x1 x2 आ गया, आयोटा जो है ना इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, योटा कॉमन निकाल लिया, x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 1 आ गया इंटू योटा, प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 बाई 1 इंटू बाई 2, x1 बाई 2 माइनस बाई 1 बाई 2 आ गया, इसको ना अलग कर लिया रियल पार्ट को, तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब इसका कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट लेने से ये टर्म जो है ये माइनस हो जाएगी, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन को आपने कंपैरिजन करना है, तो ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हम कंक्लूड करते हैं कि z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट ये है इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 z2, ठीक हो गया।